She'll be fine. तुम कोई गाना सुनाओ ना यार। मैं गाते तो तुम थे। मैंने तुम गाती। तुम्हारी बेटी गाती। नहीं डांस करती थी। That's correct. तुमने मेरी शादी में एक बड़ा इमोशनल होके एक बड़ा फिल्मी सा गाना गाया था। बहुत फिल्मी थे तुम। हम सब फिल्मी थे। कितनी सीधी सादी जिंदगी थी। खातों में कविताएं लिख के भेजने वाले दिन थे। तुम आराम करो। मैं खाना बनाती हूँ। Full today. Not podcast. गेट से मत ताला लगे ना Hello, music. और तुम मैं सोने जा रही हूँ। और कुछ नहीं किया। अरे कुछ चाहिए? क्या देख रहे हो? मैं भी गुजरी हूँ हालातों से। कैसे सहर के कीमो चल रहे थे। अब ठीक हो। लास्ट फेज है ना। It's all right. जिंदगी है। Best part is I'm happy. मैं खुश हूँ। घूमती हूँ, फिरती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, गाने सुनती हूँ, पिक्चरें देखती हूँ। एक दिन बटन बंद हो जाएगा, लेकिन तब तक तो रोशनी है। You have to stay strong. That's life. मैंने बिस्तर लगा दिया है तुम्हारा। कुछ चाहिए तो बोलो। Good night. मालूम है, अम्बू के घर गया था। बहुत सालों बाद उससे मेरी मुलाकात हुई। मुझे देखकर खुश थी। उसको कैंसर है। मधु, तुमने मेरे कलेजे को चिमटे की तरह पकड़ के रखा हुआ है।
उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। मैं हार गया। जो मेरा नहीं है, वो फैसला लेने पर मजबूर किया तुमने मुझे। दुख तुम्हारे जाने का नहीं है, जाना तो हर उसको है जो आ गया है। तुम्हारे जाने का जिम्मेदार मैं हूँ। इस दुर्भाग्य के दुख का क्या करूं? इस दुर्भाग्य का क्या करूं? Not getting the motivation, the drive to work, not getting that energy inside so that you can perform at जाना सहमा हो गया। आपके पीछे सब कुछ सेटल करके अपने गृहस्थी की अलमारी बंद करके जाऊंगी। आपके इलाज के सामने इसकी कोई कीमत नहीं है। मत बेचिएगा। आज तो मुझ पर आएंगे। आप सबकी बारी याद रखना। पैसों से जान खरीदना मुमकिन नहीं है भैया। ये सब ऐसे लोग बोलते हैं। इन लोगों की बातों पे मत जाओ। But this is it is all. बेशक दर्दनाक होता है किसी को खो देना, पर बेहद खौफ होता है किसी को खो देने का डर। रुखसत के वक्त तुमने झूठ कहा था मुझसे कि फिर मुलाकात होगी। अब मजबूर हूं मैं सच कहने पर कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। टूटी जुल्फ की किताब नहीं बनती मधु, अब कलम से स्याही नहीं टूटेगी।
पेशेंट माधवी पाठक के नाम पे 10 लाख डिपॉजिट करना था और आगे भी आप मुझे ही फोन करना। मैं अपना फोन नंबर और ईमेल दे रही हूँ, प्लीज अपडेट कर देना। थैंक यू। 14 नंबर बेड किधर है? वो उधर है। थैंक यू। Sister, huh? I think she's responding. Huh? Sister, I think your patient is responding. हाँ मैं देखूंगी फिगर्स में मूवमेंट था। इनके घर से किसी को बुला हाँ जल्दी I just सर मिसेस माधवी पाठक के नाम पे डिपॉजिट करना। अरविंद अरविंद मैं मधु से मिली। She's responding. कब से फोन कर रही है तो फोन ही नहीं उठा रही हो। मैंने नर्स को बता दिया। I'm so happy now, don't worry. गरम गरम हलवा लाई हो, हलवा खा लो। मैं चाय लाती हूँ। अरविंद वो भाभी रिकवर कर रही है यार। भाभी रिकवर अबे अबे सुनना भाभी रिकवर कर रही है मेरे भाई। ये भाई ये भैया भैया ये भैया Disappear for a month. On Monday, we're starting the chair Tai Chi challenge for men over 50. Just set.
अरविंद पाठक यानी कि अनुपम खेर अपनी पत्नी मधु यानी कि नीना कुलकर्णी के साथ यूरोप के ट्रिप का प्लान बनाता है, मगर अचानक उनकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है जब एयरपोर्ट पर ही मधु का ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अस्पताल और ठंडा बाप रे ऊपर से मिलाइटा माने बिना पछो तो सरकारी में तो बड़ा दिक्कत है मंदिर में से शिक्षक संघ जिला कार्य समिति मुकवान पोषक समिति जैसा स्थानीय कार्य समिति दुख शोक को यस उन्होंने पिता को आत्मागति शान्ति र प्रकाशको कामना गर्दै शोक सन्तप्त समस्त परिवारलाई गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछौँ र परिवारजनमा धेरै हार्दो कामना गर्दै यो नेपाल शिक्षक संघ जिल्ला कार्य समिति अनुकूल सँगसँगै शिक्षक सरकारी सरकारी उत्तरबाट ल्याइएको संवेदनालाई प्रतिनिधित्व ग्रहण गर्दछु र हस्तान्तरण गरिदिनको निम्ति नेपाल शिक्षक संघ जिल्ला कार्य समितिमा बनेका उपाध्यक्षलाई केशव शिक्षक कल्याण तथा मानवीय सदस्य ज्यू र सबै त्यसै गरी नेपाल शिक्षक संघ मुकवानपुरका वरिष्ठ नेता आदरणीय गणेश संयुक्त रूपमा तिनीहरू आदरणीय नेताहरूलाई हस्तान्तरण गरिदिएको निम्ति आशावादी गर्दै ग्रहण गरिदिनको निम्ति परिवारका सदस्यलाई अनुरोध गर्दछु। निवर्तमान अध्यक्ष एवं नगरपालिकाबाट दुःख र शोक ये उखाड़ा ना जब
Stockholm. Usually, or you take almost video. आदरणीय जनसमुदाय यही फागुन इरानमाथि अमेरिकाको भीषण हमलाको असर त्रिभुवन विमानस्थलमा अलपत्र नेपाली श्रमिकको उद्धारमा रासुपाको र्याब सक्रिय मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरू अवरुद्ध भएपछि विदेशबाट फर्किएका तथा पुनः श्रम गन्तव्यतर्फ जान तयारी रहेका सयौं नेपाली श्रमिकहरू काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अलपत्र परेका छन्। अचानक उडान स्थगित हुँदा बस्ने र खाने खाना विहीन बनेका उनीहरू विमानस्थल परिसरमै विक्षिप्त बनेका थिए। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले र्यापिड एक्सन टिम रियाड विभागका कार्यवाहक प्रमुख आशिष थापाको संयोजकत्वमा विभागलाई तत्काल परिचालन गर्दै कार्यवाहक प्रमुख थापाको टिमले उडान रद्द भएर अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई उद्धार गरेको छ। रियाड टोलीले
विमानस्थल परिसरमै पुगेर अलपत्र श्रमिकहरूको विवरण सङ्कलन, स्वास्थ्य अवस्थाको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन तथा आवश्यक समन्वय कार्य गरेको छ। त्यसपछि चरणबद्ध सोचे अब घरको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि किन बिग्रो हेर्नुहोस् त झापा 5 मा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ बालेन शाह भर्सेस केपी शर्मा ओली। अब बन्नेवाला प्रधानमन्त्री भर्सेस 3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सुरुमै प्रश्न गरे कि मैले कसको योग चाहिँ बोलियो छ। योग त यस्तो छ, मलाई एकपल्ट कस्तो परेको थियो भनेदेखि राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग मेरो परिचय भयो। अनि त्यसपछि यसै क्रममा अब म त नेताहरू भेटेपछि अनि अरू भनौँ न विशेष व्यक्ति भेट्यो भनेदेखि तपाईँको जन्ममिति यताउता भनेर अलिक भनौँ न त्यो लिने अनि हेर्ने गरिन्थ्यो। मैले उहाँको चाहिँ लिएको यसो गरेँ, गर राम्रो रहेछ, राजनीतिमा त तपाईँको राम्रै सफलता देखियो भन्ने खालको कुरा मैले गरेँ। अनि चुनाव पनि आइरहेको मौका थियो, यसभन्दा अगाडिको चुनावको है। अनि त्यो त चुनाव जित्ने कुरालाई त अब धेरै राम्रो खालको यो भएको व्यक्तिलाई चुनाव जित्नेको त खासै टेन्सन भएन भने मलाई एउटा राम्रो उहाँले चाहिँ के प्रतिक्रिया दिनुभयो भनेदेखि मेरो गर त राम्रो भन्नुभयो तपाईँले होइन। यदि मेरो प्रतिस्पर्धीको पनि यस्तै गरेर परेको रहेछ अथवा यो मेरो गरेर भन्दा अझै राम्रो गरेर रहेछ भनेदेखि के हुन्छ भनेर सोध्नुभयो क्या उहाँले। त्यो मलाई शिक्षा भयो। हेर्नुहोस्, मैले अन्यत्र पनि मैले मौका चाहिँ जस्तै अस्ति भर्खरै पनि केपी ओलीको र ईश्वर पोखरेलको बारेमा सोध्न भनेर यहाँ आएका थिए होइन। मैले केपी ओलीको त मैले हेरिरहेको छु, तर ईश्वर पोखरेल त मैले हेर्न पाएको छैन होइन, हेरेको छैन होइन। गर्नलाई मैले यसभन्दा अगाडि पनि ईश्वर पोखरेलको र यो यहाँको चाहिँ हुनुहुन्थ्यो नि नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ एकजना होइन, पछि बिरामी हुनुभयो नि, के अरे 9वटा नाम आउँछ कि उहाँको आचार्य के अरे कस्तो जोस उहाँको हेरेँ होइन। चाहिँ म सुन्न आएका थिएँ, मलाई नेपाली काङ्ग्रेसका व्यक्तिहरू आएका थिए कि। अनि यो लगभग 72 भन्दा अगाडिको दोस्रो संविधान सभाको उसमा आइसक्यो जस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि त्यो हेरिसकेपछि मैले चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसका आएका थिए, उहाँको चाहिँ लिएर आएका थिए, उहाँको चाहिँ भइहाल्यो, तर ईश्वर पोखरेल आएको थिएन। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ भनेदेखि हेरेर फेरि चाहिँ भलै उहाँको पनि दुइटैको वृषराशि पर्दो रहेछ। अनि त्यसपछि हेरिसकेपछि मैले ल चाहिँ आचार्यजीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँको चाहिँ विजय हुने, तर झिनो मतले हुने भनेर मैले भने त्यति बेला होइन। अनि पछि चाहिँ परिणाम त्यही नै भयो, 300को भोटको अन्तरमा चाहिँ त्यो उसले जित्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसका। अनि यस्तै चाहिँ अब अस्ति पनि त्यस्तै परेको थियो। अब मैले केपी ओलीको त हेरिराखेको कुण्डली हो, एउटा राम्रै कन्डिसनको गराउनु छ उहाँका। मैले त्यसरी चाहिँ मलाई केपी ओलीले नै जित्नुहुन्छ भनेर भने अस्तिको उसमा। अब यस्तै अब यति बेला पनि यी दुईटाको कुरा हो। Make it a habit. 7 days of Tai Chi every morning to move past your weight loss plateau. We start this Monday, March 2nd. You in? Running hurts.
show you the details of those shootings. The first takes place at the corner of Cottontail Complex. The victim is 34-year-old Bindu Khan. Millions of people shooting, but at 1:15, we see the man carrying the artillery to the head. He dies later at hospital. Discord, wildfire spreads conflict. Escalates to fury. Outside gates. Assault lasts for 4 minutes. Soldiers drive by the crowd and retreat into the lands of Khartoum. The next order to country Ministry of Food is unambiguous. The next person to be shot is 27-year-old Gobble. At 1:48, we find him on the opposite side of the alley. This is the view from Gobble's home. He reports a call of police officers that at least 2 of them are armed with handguns. Gobble then walks away from the front lines. His camera captures this man, throwing stone at police. And then Gobble falls. We are found another view of this incident. He is gone. The man falls straight. Gobble is shot. His medical report states that the bullet entered beneath his left arm, exiting through his back. We cannot make a precise trajectory, but we can see the general direction from which the spirit was fired, and it points toward the same group of police Gobble and Lily had filmed just minutes. The group makes it on the spot by many means. The surrounded. At almost the same moment, 200 meters to the west, another gunman is shot. This is 23-year-old Rashid Khan. His T-shirt says, "We want agents, not agents." All from leg, thumb, and one finger. A protester's phone captures images of Rashid being carried away. With a bullet into his chest. He died in the surgery. He was 22. By this time, Clinton Whisper are urging demonstrators to leave. A 24-year-old Subaru Shrestha stays at the Harlem gates. He's carrying a sign that says, "No more corruption." See him here, wearing a blue backpack, observing the crowd.
wound in his chest. He died in his seizure. He was 22. By this time, a cancer whisperer urges them to take his to the end. The 24-year-old Mr. Rochester stays at the Albertsons. His carrying sign that says, "No more corruption." Seen here, wearing his backpack, Jordan contemplates his fate. Seconds later, just a few steps away, soon he's dead. Realizing that he could not live, protesters carried Sunak to the police. In minutes, and covered and passed down. Witness the shooting was 17-year-old Jude Tucker. Minutes later, police were at Junction shooting his head. Ahead of them, a group of protesters is belting police with stones. Jude turns away from the crowds. He kneels down, sees other last steps and takes. Moments later, another group captures their jeeps, which go farther across the park. Bleeding heavily from gunshot wounds to the back of the head, Jude is carried across the road. Bystanders lift him into an ambulance, but it's too late. By the time he arrives at the National Homicide Unit, Jude is dead. Police have investigated a shot outside the bar's garden on September 9th. The bar's Gen Z protesters were almost not hit by the plane, rushing and shouting were killed by police, but none of the shootings was captured on camera. The next person to be killed, William Penn, was shot just a few steps ahead. And this time, we have the clearest evidence of that as William fell. Shots within 5 from inside the ground's car. Not the second deadly shooting. According to Abraham Ernest Campbell, who was the witness from Parliament as a whole, pay attention to this group of police officers. At exactly 2:29, they move towards the wall separating out from the street. Seconds later, we hear 7 gunshots and see William lying dead on the ground. This camera angle does not reveal who shot him. The scene filmed from 3 steps further along the pavement. At first glance, there is no evidence. But if you zoom in and stabilize the footage, we can clearly see gunshots.
According to official figures, 19 migrants were killed in the protests on September 8th. A further 300 were injured. So how did the police identify the suspects? According to records, the family transferred in order to be administrated for consulate hearing. Killed from the Fishburne attack. The officer in charge of the company's operations in Kathmandu Bay. The killer was not returned to March. The police company said that the first bullet was used force to cut more seals using calcite extraction. Advanced most senior officer, Inspector General of Police. He has denied responsibility. The company told us that the security force came to report made up of the most male security forces. They said IGP company did not issue an order to use force ahead of this decision is other police officers have admitted to failures in intelligence, training, and direction. They also blame none for failing to support them. But most are haunted by what happened. Despite the safety, the Prime Minister does listen. Faced with such intransigence, some protesters began to suggest a different
security forces are deployed in and on conflicts. By 2:30 a.m., but the crowds do not lie down. Again, Russia is among them. This is the key from Macron as protesters move towards parliament. By 9, things are getting ugly. Crowds more and more. Their homes are full to the windows. The lion's has seen the lion circles in real time. The winds are hot and filled with French. Officers say this is what comes after a police force to the Parliament. Never mind. After a while, the police appear to give up their task to control the law. This video posted online shows police being told to prioritize their diplomacy. With the police in retreat, chaos reigns. Nepal's parliament, left undefended, falls to the ground. But it's under their control. The building is set ablaze. Crowds reach the Supreme Court and see the historic document housing most of their concerns. Army helicopters circle overhead. Everything puts the leaders from burning roads to safety. By 2:35, armies demand peaceful but unfit. Civil police officers also declare community contact. Rank and file officers left on the streets are now targets. Some are stripped of their uniforms and publicly humiliated. One junior officer told us he felt a burden on his comrades. Widespread
हम्म